Good morning, everyone. V-Mart has opened 16 stores, new stores this quarter, and they have closed 2 stores. So in Q2 FY23, their store count is 405 stores as of 30th September 2022. Nykaa has announced 5 shares for every share held, a bonus issue. But I don't understand how a company which is not making great profit is announcing such a big bonus. So, market has given some thumbs up, but I'm not positive on Nykaa. Adani port volume has seen 15% growth year-on-year basis. CNG prices have been increased by MGL. So they have increased 6 rupees on CNG price to 86 per kg. And PNG price has been increased by 4% to 52 rupees 50 paisa SCM. So it could be slightly positive for MGL because whatever price hike has been done, it has been passed through. NINL, it is Neelanchal Ispat Nizam. They have commenced operation with the lighting of its blast furnace within 90 days of acquisition. This is said by Tata Steel. So this was a company which was bought from all the government agency. So in 90 days, they have kick-started the operation. The NMDC also has a steel plant which they want to sell. So whenever it goes to a private agency, I think that will have a big re-rating effect. Very soon, we will have a demerger of NMDC Steel and NMDC Iron Ore Company. And post the demerger also, the Iron Ore division will give 7 to 8% dividend yield is what the market expects. I have posted that CNBC interview link for your this thing. M&M Finance announced September 22 disbursement and the quarter disbursement. So they said September 2022, 4,080 crores were disbursed, which is higher by 110%. And for this quarter, it is 21,300. And the total AUM is 73,900, which is higher by 16% year-on-year basis. And the collection efficiency has improved from 96%, which was there in August, to 98%. So Mahindra Finance corrected due to a few reasons. I think there can be some rally there. South Indian Bank gross advance is 67,981 crores. It is higher by 17%. Deposit is higher by 2%. CASA at 34%. Even IndusInd Bank, their gross loan growth is 18%. So banking as an industry, good banks are growing at 15 to 18% on an average. We had yesterday Federal Bank announcing that 19.4% is the provisional growth. So I think if market stabilizes, banking will come back very strongly. Already defense related stocks are making all-time high. Or 52-week high, Mazagon Dock, Cochin Shipyard, BDL, GRSC. So these stocks are outperforming, and we expect these stocks to outperform. Even hotel stocks are making all-time high. Indian Hotel and Lemon Tree, or 52-week high, whatever the case may be. Taj GVK yesterday made. So Chalet Hotel. So we like hotel as a space, and the whatever ground report we are getting, hotel will report a very good results. Even we like QSR, Jubilant Food, Barbecue Nation are our coverage stock, and we like Devyani International also in this thing. Yesterday, Adani Group stock corrected. Adani Enterprises at one point of time was 9% down. There are talks in the market that Deutsche Bank being in problem, and Adani Group has taken pledging the loan, has taken loan from Deutsche Bank is what we are hearing. So if that is a case, then it could be a trouble. But this is one segment we don't track or we don't recommend. So we stay away from Adani Group in total. PayU
this company has last year in 31st August 2021 has bid for BillDesk at $4.7 billion, and that deal has been called off as of now. So no, that is big negative for merger and acquisition. So here, PayU went and did all the thing, and they saw their technology, their way of working, and today they have called it off, which is something not heard of in recent time. So we need to watch what is likely to happen. But be with momentum stock, be with stock which are near all-time high, or stocks which have not corrected in the last 15-20 days. They will recover faster, and for somebody who is looking for less than 1 year, the returns will come from stocks which are on strength, not buying weakness. Even in pharma, we have Cipla, which is making an all-time high, whereas pharma index has not been performed. So you need to understand performers, and you need to bet on performers. We like Blue Dart in this space, and Mahindra Logistic also are stocks to watch. With that, over to you, Brijesh. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने स्ट्रैटेजी कैपिटल मार्केट के ऊपर हम लोग ने रिपोर्ट रिलीज किया, जिसपे हम लोग ने ये बताया कि लास्ट मंथ का ओवरऑल मंथली परफॉर्मेंस कैसे रहा। S&P 500 पे हमने देखा कि ग्लोबल इंडाइसेस पे वो 9% पे करेक्टिव रहा है, और ओवरऑल आप मार्केट देखोगे तो 25% का करेक्शन देखने को मिला है। हमने ओवरऑल ये देखा कि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में करेक्शंस आए, उस वो परसेंटेज टर्म में हमारे इंडियन इंडाइसेस पे करेक्शन नहीं देखने को मिला है, विच इज जो एक पॉजिटिव साइन है। जीडीपी के ग्रोथ 1%, निफ्टी 50 के जो ग्रोथ थे वो 1% से डाउन थी, बट रिलेटिवली हमें लगता है कि ये ठीक रहेगा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए। हमने हमारे सेक्टर वाइज रिकमेंडेशंस दिए और स्टॉक्स भी हमने बताए और रिपोर्ट में। हमारे जो टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, M&M, गोदरेज कंज्यूमर, LTI, एस्ट्रल, सिटी यूनियन बैंक, APL अपोलो, शैलेट होटल, PSP प्रोजेक्ट्स एंड राइट्स। एक कुछ स्टॉक्स है जो हमारे स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में हमने कवर किए। डिटेल्स रिपोर्ट हमने मेल कर दिया है, तो आपको डिटेल्स रिपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आगे एक अपडेट है वी मार्ट के ऊपर। उन्होंने 16 नया स्टोर्स ओपन किया है और 2 स्टोर्स उन्होंने बंद किया है। ओवरऑल उनका जो स्टोर्स के जो काउंट है वो 405 के करीब है। सो ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज है वी मार्ट के चलते हुए। अगला एक अपडेट है नायका के ऊपर। नायका ने बोनस शेयर्स का उन्होंने डिक्लेरेशन ये दिया है, 5 शेयर्स देंगे 1 शेयर्स के लिए। तो ओवरऑल उनका बिजनेस के चलते हुए हमें इतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव व्यू मान के चल रहे हैं। अडानी पोर्ट्स के रिलेटेड एक न्यूज है, उनके ईयर ऑन ईयर 15% से वॉल्यूम ग्रो हुआ है। सो जो एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है अडानी पोर्ट के लिए स्पेसिफिकली। गैस के ऊपर MGL के ऊपर एक अपडेट है, वहां पे जहाँ पे उन्होंने CNG के प्राइसेस बढ़ाए हैं और PNG के भी प्राइसेस उन्होंने 4% के करीब बढ़ाए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए शायद MGL के लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। अगला एक अपडेट है M&M फाइनेंस के ऊपर। उनका जो सितंबर 2022 का जो क्वार्टर का जो नंबर्स है 480 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल 21,300 करोड़ से ये उनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 23% ईयर ऑन ग्रोथ है। AUM भी उनका 73,900 है। 96% कलेक्शन देखने को गया। तो बीच में हमने देखा कि M&M में कुछ थोड़ा नेगेटिव न्यूज चल रहे थे, स्टॉक्स ने करेक्ट किया था। ये न्यूज के बाद हमें लगता है कि M&M में थोड़ा सा आपको तेजी या पॉजिटिव बायस देखने को मिल सकता है। अगला एक अपडेट है साउथ इंडियन बैंक के ऊपर। साउथ इंडियन बैंक के जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है 18% का ग्रोथ देखने को 18% का ग्रोथ देखने को मिला है। डिपॉजिट्स के 2% ग्रोथ है। कासा में इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल लोन ग्रोथ भी उसमें देखने को मिला है। तो हमें लग रहा है कि ये जो साउथ इंडियन बैंक है, ये स्टॉक थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और ये इसमें पॉजिटिव बायस है। अगला जो अपडेट है एक फेडरल बैंक के ऊपर है। उन्होंने भी प्रोविजनल ग्रोथ 19.4% का बताया हुआ है।
उनके भी लोन ग्रोथ और ओवरऑल ग्रोथ में उन्होंने बोला है कि वो काफी अच्छे कर रहे हैं लास्ट 4 क्वार्टर के हिसाब से। हमें लगता है कि जब भी बैंकिंग स्टॉक सस्टेन करेंगे और कोई जो लाइक अगर मार्केट जैसे स्टेबल होता है तो ये जो जिनके लोन ग्रोथ काफी अच्छे है जैसे कि साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, इसमें आपको काफी अच्छा पॉजिटिव बायस या यहाँ से फ्रेश बायस भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये पिछला एक महीने में डिफेंस स्टॉक ने काफी तेजी देखने को मिला था, तो हम वो व्यू मेंटेन करके चल रहे हैं। जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, 52 वीक्स हाई पे है, जैसे कि मजगांव है, कोचिन शिपयार्ड है, बीडीएल है, इसलिए हम मेंटेन कर रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव बायस रहेगा। डिफेंस के साथ हम एक होटल सेक्टर्स पे भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जो भी नंबर्स आएंगे होटल्स के काफी अच्छे होंगे। इंडियन होटल, लेमन ट्री, ताज, जीवीके में कल थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। शैले होटल तो हमारा फंडामेंटल पिक भी है। तो हमें लगता है कि मार्केट साइडवेज भी रहता है तो फिर होटल इंडस्ट्री के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, तो होटल इंडस्ट्रीज में हमें ध्यान रखना चाहिए। पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं और कंटिन्यूएशन होगा इसमें और थोड़ा अच्छा खासा अपसाइड और हमें देखने को मिल सकता है। होटल के आगे उसके बाद यूएसआर, स्पेसिफिकली जुबिलेंट और देवयानी पे भी हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है, तो इसमें किसी के पोजीशन है तो आप होल्ड करके चलिए। हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है इसमें भी आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगला एक न्यूज जो हमने देखा है कि अडानी ग्रुप के ऊपर कल हमने देखा कि काफी सारे अडानी स्टॉक्स काफी मेजर करेक्शंस देखने को मिले। जो न्यूज ये सुनने में है कि जो डच जो बैंक है जो थोड़ा से प्रॉब्लम में है ऐसे समझने में आ रहे हैं, और अडानी के काफी सारे लोन उनके पास से उन्होंने हेज मॉर्गेज किया हुआ है। सो मोस्टली अगर ये बैंक को कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो शायद हो सकता है अडानी ग्रुप को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम अडानी को वैसे ट्रैक नहीं करते तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ हम कमेंट नहीं करेंगे, बट हम कॉशियस व्यू डेफिनेटली बताना चाहेंगे। इसके आगे अपडेट है मारुति के ऊपर। मारुति के सेल्स के नंबर आए हैं तो काफी अच्छे थे। उन्होंने कहा है कि चिप के चलते हुए उनके प्रोडक्शंस पे इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं किया है, उन्हें लगता है कि उनका जो सेल्स फिगर काफी अच्छा है, विच इज ए पॉजिटिव न्यूज फॉर द मारुति। उसके बाद अपडेट आया है ब्रिटानिया के ऊपर। उन्होंने केनिया में एक कैन फ्री बिस्किट कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है, जो ब्रिटानिया जो एक कैटलिस्ट ब्रिटानिया ब्रांड लिमिटेड जो उनका जो प्रोडक्ट है उसके साथ वो मर्ज करेंगे। अगला एक न्यूज है केसी इंटरनेशनल के ऊपर। उन कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं 1407 करोड़ के अक्रॉस दी सेगमेंट में, तो उनके ओवरऑल अभी तक की जो ऑर्डर बुक्स है 8400 करोड़ पे स्टैंड करता है। और एक न्यूज है दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर। कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया आरबीएल डीबीएल और उन्होंने 1060 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट के पास से, जो जो भी एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है दिलीप बिल्डकॉन के लिए। रिजल्ट अपडेट में ये एक इंडसइंड बैंक के ऊपर हमने देखा है कि उनके जो ईयर ऑन ईयर 18% से ग्रोथ देखने को आया, 5% क्वार्टर एंड क्वार्टर हुआ है। उनके ये जो उनका जो लोन ग्रोथ देखा है उन्होंने बताया कि लास्ट 4 क्वार्टर्स में सबसे बेस्ट है। उनका डिपॉजिट जो है वो भी 15% से ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल उन्होंने कहा है कि ये काफी पॉजिटिव है इंडसइंड बैंक के लिए, और हमारा इस पर बाय रेटिंग है 1260 के टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर अपडेट है जहाँ पे उन्होंने बोला कि उनके भी जो लोन्स है वो 9,145 करोड़ ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 7,132 करोड़ के सामने, जो कि 28% की ग्रोथ है। सो उनके लोन बुक और डिविडेंड ग्रॉस डिविडेंड इनकम भी काफी पॉजिटिव देखने को मिला, तो ये हमें लगता है कि ये एचडीएफसी लिमिटेड के लिए भी काफी स्ट्रांग है। हमारा एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर बाय रेटिंग है 2950 का टारगेट है हमारे एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। अगला एक न्यूज है इन्फो एज के ऊपर। उन्होंने 51% स्टेक लिया है निंजा करके फर्म है 135 करोड़ के लिए।
सो ये बेसिकली ई लर्निंग और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहेगा. सो ये जो नौकरी के जो ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ ये कंबाइंड रहेगा. हमारा इस पर कोई फॉर्मल कवरेज नहीं है, बट ये शायद पॉजिटिव न्यूज हो सकता है इन्फो एज के लिए. अगला एक अपडेट है डीमार्ट के ऊपर. डीमार्ट ने के रेवेन्यूज आए हैं 36% ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है. और डीमार्ट ने बताया कि उन्होंने 8 नए स्टोर्स ऐड किए हुए करेंट फाइनेंशियल ईयर में. ये और उनका जो स्टोर काउंट है अभी 302 है ओवरऑल. सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है डीमार्ट के लिए. इसके आगे आईटी फर्म के ऊपर रिलेटेड एक न्यूज है जहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा इन्होंने ऑफर लेटर्स जो दिए थे जो फ्रेशर्स को, जिसमें उन्होंने डिले किया था. और जो डिले जो किया था उन्होंने 3 to 4 मंथ से उन्होंने डिले किया था, वो अभी रिवोक कर रहे हैं. तो ओवरऑल ज्यादा ये जो स्लो डाउन के चलते उन्होंने इस स्टेप्स उठाए थे, तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉशियसली लेके चलना चाहिए. सो ये काफी इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज नहीं है. इसके चलते हुए भी हमारा जो फंडामेंटल पिक में हमें इन्फोसिस और एलटीआई ये दो स्टॉक्स है जो हमको पॉजिटिव लगता है. Technical data update. If you see on Friday's trading session, we had a good rally, but on Monday's trading session, this rally got negated and we ended on a negative note, losing near about 207 points. So Nifty is unable to sustain above 17,000, and we are seeing the call writings above that level. On the sectoral front, if we see, then pharma and telecom stocks were marginally positive, and rest other sectors were closed in trade. So technically, if we see, if we break 16,800 and go below, then there would be loss of momentum, and this should act as a key support for Nifty. And for the upside also, if we see, then 17,200 would act as a barrier. If this is taken away, then we could see another 200 points of rally from there. So bias for the day remains cautious, and we expect a range-bound trading session. And as SGX is also giving a 250 points gap up, so let's see if we are able to sustain about 17,000, then we could move ahead to 17,100, 17,200 levels. Vis-a-vis Bank Nifty is again an underperformer only. It just barely maintained to hold 38,000 levels. So Bank Nifty, if we see 37,500 would be a crucial support. If that is taken away, then it could go down to 36,000 level also. So again, sideways and bounces expected in Bank Nifty today. And OI data, if we see 38,000 has a highest put rating in Bank Nifty, and the call rating is seen at 38,500. Vis-a-vis in Nifty, if we see, then put rating is seen at 16,400 levels, and call rating is seen at 17,000, 17,100 levels. And on the futures front, if we see, the short build-up was seen in Nifty to the tune of 6%, and in Bank Nifty, if we see, there was no major additions, just barely shorts were built up, that is nearly 1,000 contracts back. And PCR is also saw a downtick to close at 0.84 from 1.22. And FIR stats also, if you see, then they have added a short position only, that is tune of 13,000 contracts. So that net position stands at 1,27,000 contracts, and long short is standard 13%. In cash market, if you see, they were buyers for 590 crores, and DIFs was seller of 423 crores. And that's it from mine. I'll hand over to Varun sir for more updates. Thank you. Yeah, thank you very much. So from research side, first update on Marico. So company is likely to report low single-digit revenue growth on consolidated level. So overall, we understand that the price cuts which has happened in Saffola oils segment, that will lead to high single-digit kind of volume growth, and this is what has led, what is likely to drive low single-digit kind of value growth in the overall business. Coconut oil, we expect volume to decline in low single digit, whereas value added hair oil segment has been impacted due to subdued rural demand. On gross margin, gross margin is likely to expand year on year, driven by soft copra prices. However, edible oil and crude oil prices, which has declined quarter on quarter, is likely to support gross margin expansion going forward. Operating margin is likely to be flat on year basis, and net profit to be impacted by relatively higher effective tax rate. So overall, we understand that this is not this is a inline kind of numbers that we are likely to expect in Marico. We have a positive view on the company, and we continue to maintain our constructive stance. A second update is on Avenue Supermarts. So
Company has reported 36% growth in overall revenue and has added 8 stores during the quarter. Now total store count stands at 302. We understand that on 3-year CAGR basis, revenue growth stands at 20%. This is relatively lower compared to pre-COVID levels of 3-year CAGR, which was close to 20 to 25% rate. So, however, we expect we don't see this to be any kind of structural problem. Just that the retail expansion rate needs to be a bit faster, and SSG, we will be tracking that how it is stacked up and how it is likely to improve. So we are bullish on Avenue Supermarts, and we continue to maintain our stance on the company. Next update is on IT sector. So according to media reports, top IT firms like Infosys, Wipro and Tech Mahindra have revoked offer letters given to freshers after delaying their onboarding by 3 to 4 months. So in FY22, these companies hired around 2 lakh freshers to deal with high attrition rates, which was putting margins under pressure, and have plans of hiring around 1 lakh freshers during the current fiscal year. We believe that this is a relatively negative development for IT industry, as revoking offer letters when attrition levels continue to remain high towards so it highlights towards potential slowdown in the industry. So we will watch out if there is any revision in the fresher hiring targets by the companies. Our top picks in the sectors are Infosys and LTI. Next update is on Info Edge. So company has acquired 51% stake in Coding Ninja for 135 crore rupees. A company is in e-learning and education platform space. This is complementary to Naukri platform. We do not have a formal coverage on the stock, but it bodes well for the existing shareholders of the company. On metal sector, we released a report wherein we talked about how Indian steel prices remain range bound in the month of September. Overall, steel prices was lower. Hot rolled coil prices was lower by 1%. However, Chinese steel prices declined by 5% on monthly basis. Even coking coal prices declined by 6%. For August, global steel production grew by 1% month on month, while Chinese steel production grew by 3%. Chinese exports declined 8%. Meanwhile, crude steel output grew marginally by 1% month on month. We maintain our neutral stance on the sector as we await better entry point. However, we foresee Tata Steel's European operation to be a key beneficiary due to supply constraints amidst Russia and Ukraine conflict. Hence, we prefer Tata Steel stock in the ferrous space. Next update is on banking sector. So IndusInd Bank has reported best ever growth kind of in last 4 to 5 quarters on both net advances and total deposits front. So net advances grew 18% year on year, while total deposits grew 15% year on year. We believe these are strong set of numbers and is positive for the bank's existing shareholders. We continue to have a buy rating on the stock with a target price of 1260. On SDFC Limited, so SDFC also reported a very strong set of numbers, 28% growth in assigned SDFC assigned loans to rupees roughly 9,000 odd crores. So gross income from dividend for the second quarter grew by 16% year on year to roughly 1,400 odd crores. Individual loans sold in the preceding 12 months amounted to 34,000 crores. We believe these are healthy set of numbers and continue to have a buy rating on the stock with a target price of 2950. Yeah, so that's it from my side. Over to you, Kshitija. Thank you, sir. Few updates from my side. Maruti Suzuki India reported its vehicle production at 1,77,468 units in September 2022. The company produced total 81,278 units in the same month last year. The shortage of electronic components had minor impact on the production of vehicles during the month. Next update on Britannia Industry. Britannia Industry stated that it has acquired controlling stake in Kenya's Kenafric Biscuit Limited and took full control over Catalyst Britannia Branch Limited. So Britannia and Associate Dubai Private Cooperative Limited, wholly owned arm, acquire Nairobi-based liability firm Canafric Biscuit Limited by subscribing to 51% equity share capital of the economy. So this update on the regulatory filing.
Next update on Vedanta. Vedanta said that it has its aluminum production increased by 2% to 584,000 tons in the second quarter of the ongoing fiscal. Company's aluminum production in the corresponding quarter financial year 22 stood at 570,000 tons. The mine metal output at Zinc India during the July to September quarter also went up by 3% to 255,000 tons over the 248,000 tons in the same period of the previous fiscal. Next update on KEC International. Company has secured a new order of worth rupees 1,407 crore across all segments. Company's year-to-year date order book now stands at 8,400 crore. So this is a positive development on KEC International. Last update on Dilip Buildcon. The company's joint venture RBL DBL has bagged 1,061 crore contract from Surat Metro Rail project in Gujarat. So this is also positive for the Dilip Buildcon. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir for further updates. Thank you.